स्ट्रायकर एंडला आकाश, स्ट्रायकर एंडला वैभव. ही सलामीची बिनीची जोडी. मगाशच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच झाला पुरस्कार तो आकाश स्ट्रायकर एंडला. MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने पहिला सामना थोडासा कमी धावसंख्येचा आणि त्यावेळी थोडासा गमवावा लागला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जयेश सरमळकर या मैदानावर इतिहास रचल्यास या खेळाडूने. एका बाजूने जयेशनं 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार. पहिला चेंडू बॅक टू द बॉल. स्ट्राईक ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूपाशी. 2 क्षेत्ररक्षक कोणत्या क्षेत्र चेंडू अडो बाबा. सुरज आणि प्रतिवर्ष दुसऱ्या क्षेत्राचा ताळमेळ चुकतोय आणि क्षेत्ररक्षण सुंदर पद्धतीचं आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये केलं जात. दोन धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. 2 धावा धावफलकावर पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. सुरेख पद्धतीचा चेंडू शफल चाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता पण थोडासा दूर चेंडू. अवंतरच्या स्वरूपात 1 धाव ही धावफलकावर. बोनस स्वरूपाच्या धावफलकावर एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 3 धावा धावफलकावर पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या चेंडूचा हा खेळ समाप्त झाला. 2 धावा. त्यानंतर बोनस स्वरूपाचा धावफलकावर गती परिवर्तनाचा चेंडू. मोठा फटका पाहायला मिळतोय आणि गगनाला गवसणी घालणारा फटका. ऐनमुखेच्या क्षणी झेल सुटतोय आणि सुटलेल्या झेलला मात्र शिक्कामोर्तब. आकाशच्या चेंडू पळतून घणाघाती फटका पाहायला मिळतोय. तो 6 धावांसाठी डिस आहे. धावफलकावर 9 धावा धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा. त्यानंतर स्वेरचा चेंडू आणि त्यानंतर गडाघाती प्रयोग. षटकारानं स्वागत. हे दर्शन नामक गोलंदाज केलं जात आहे. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका. डीप मिड विकेटला सरळ चेंडू ट्रॅव्हलर करतोय. जो बोलबाला चालवलाय सकाळच्या सत्रामध्ये षटकार चौकारांची आतषबाजी आम्ही करणार. एसजोरियस संघाच्या बाजूनं तो बोलबाला कुठेतरी चालला जातोय. आकाश नामक फलंदाज जणू काही तेजोमय सितारासारखा सुरुवातीच्या कालखंडापासून चळकला जात. चौकारानं सांघिक धावफलकावर 13 धावा या धावफलकावर. 13 धावा धावफलकावर. दर्शन नामक गोलंदाज थोडीशी मोठी धावसंख्या खर्च करतो. शॉर्टपिच प्रकारचे ओव्हरपिच पद्धतीचे चेंडू. त्यावर मोठे फटके ही लिलावायास आणणारे थोडीशी मोठी धावसंख्या बहाल करतोय तो आकाश नामक फलंदाज. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू. आडव्या बॅटनं पटक्यात टोलबाबा हा मनचुका. शॉट पाहिले क्षेत्ररक्षक आमच्या स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येसाठी गणला तो फटका. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. धावफलकावर 14 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. सुंदर गोलंदाजी. कमबॅक करणारी गोलंदाजी. एका बाजूनं आकाश आणि एका बाजूनं वैभव. ही सलामीची जोडी आणि 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर हा लेखाजोखा आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्लो रन पद्धतीचा चेंडू. थोडासा अँगल करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे अपील सुरू केला तर पंचांगतायत आत्मविश्वास कमी असेल आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाची सांगता होते. 6 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावफलकाचा विचार केला. एसजोरियस संघ एका ताकदीनं ही लढत. एक पूर्ण टीम त्यांची आणि दुसऱ्या बाजूनं MSPR स्पोर्ट्स संघ. जय सरमळकर सारखा एक तगडा खेळाडू त्यांच्या कोट्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजून एक विस्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये सूरज मलळकर. जी नावं कागदावर आहेत त्या कागदावरच्या नावाने एका बाजूने बबलू गावडे. जे कार्य मैदानामध्ये करावं लागेल आणि त्या कार्यासाठी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये जो प्रारंभ घडतोय तो एसजोरियस संघाच्या बाजूनं म्हणजे षटकार आणि चौकारांची लयलूट करणारी केळी या मैदानावर मात्र आजमावली जाते. 14 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. संघाचा संघनायक हुकमे एक्काची ख्याती कर्णधाराच्या रूपात केली गेली ते MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं महाराष्ट्र पोलीस दलात जो काम करतोय त्यांचा जबरदस्त मित्र जय सरमळकर सज्ज होतोय. हलक्या हाताने खेळून काढला जातोय. थोडासा स्लो रन पद्धतीचा चेंडू. डीपलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका. हा एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जात. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र पुढे सरकला गेला. 15 धावा या धावफलकावर.
15 धब्बा धावफलकावर दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर पहिलं षटक थोडस महागडं षटक 14 या धावसंख्येचं आणि त्या धावसंख्येला कुठेतरी निर्बंध लावणारं षटक या मैदानावर होतंय की काय. सोऱ्या एका गोलंदाजी, एका बाजूनं नौका खेळाडू, एका बाजूनं टेनिस क्रिकेटचा अनुभव असलेला आकाश, याची चेंडूपळी तळपली ही सुरुवातीच्या कालखंडापासून आणि तळपलेल्या चेंडूपळीला MSPR स्पोर्ट्स संघ थंड करतोय की प्रतिस्पर्धी संघाची जी तगडी फलंदाजी आहे ती ऐनमुखेच्या क्षणापर्यंत सर्वाधिक धावा जणू कुठल्या 84 धावांचा डोंगरच उभा केलाय पहिल्या सामन्यामध्ये. तोच डोंगर या ठिकाणी होतोय की काय. ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेरचा चेंडू पंच आमच्याकडे वळताय. स्वेअर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर 16 धावा या धावफलकावर. पुढे सरसव फटका टळवण्याची होती गरज, मात्र या ठिकाणी पंचांकडे अपील केलं जात आहे. पंच सरळ हात उंचावतायत, मात्र 0 या धावसंख्येवर एका बाजूने माघारी परततोय तो वैभव नामक फलंदाज आज मैदानातून. इष्टीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल. थोडस दूर ठेवला चेंडूला पुढे मारण्याचा प्रयत्न, जी कलात्मक गुणांचं कुठेतरी विवरण करावं लागेल आपल्या षटकामध्ये. आपली कला आपल्या गावामध्ये दाखवाव्या लागतील. या अनुषंगाने त्याने हातामध्ये आपला चेंडू घेतला आणि त्या कलात्मक गुणांचं विवरण ऐन मुखेच्या क्षणी आपण दाखवत. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र 16 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय तो एका बाजूला स्ट्रायकर एंडला आणि स्ट्रायकर एंडला मात्र मैदानामध्ये रोहन पेडणेकर सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. आल्या आल्या रोहनचा सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं तर संघासाठी नक्कीच 2 धावा बचावतोय. परतीची फेक येईपर्यंत या 2 धावा सहजासहजी पूर्ण करत सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 18 धावा धावफलकावर. 18 धावा धावफलकावर. संध्याकाळचं सत्र, सूर्य थोडासा मावळतीकडे, थंडीचे दिवस आणि त्यानंतर वाऱ्याचा वेग कमी होतोय आणि नाणेफेक जिंकून घेतलेली ही क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय तो मात्र MSPR स्पोर्ट्स संघानं मोठे फटके टोलवावे. या मैदानावर थोडासा शरीरष्टीवर चेंडू वाटायला तो एक गती परिवर्तनाचा चेंडू. सांघिक धावफलक धावफलकावर या मैदानावर 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 18 धावा धावफलकावर आणि या षटकाची सांगता करणाऱ्या अंतिम चेंडूचा खेळ. बाकी एकाकडेच्या मोबदल्यात SJRS संघ 18 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका टोलवतोय. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका. डीप मिडविकेट क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करायपर्यंत पहिला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाची घोरचूक आणि 2 धावा बहाल करत प्रति षटकामध्ये 10च्या सरासरीनं या मैदानावर खेळतोय तो SJRS संघ 20 धावा धावफलकावर एका गटाच्या बदल्यात. नाट्यरसिकांना खुशखबर. सोमवार दिनांक 17/1/2022 संध्याकाळी ठीक 7 वाजता श्री देवेंद्र नाईक पुरस्कृत चेडवणकर दशोत्तर नाट्यमंडळ कुडाळ यांच्या महान नाट्यप्रयोग वज्र शल्क अर्थात खवले मांजर हा नाट्यप्रयोग याच रंगमंचावर होणार आहे. सोमवार दिनांक 17/1/2022 रोजी याच मंचावर ठीक 7 वाजता. तरी सर्व नाट्यरसिकांनी याचा हा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती. सामन्याकडे वळूया. पहिल्या 2 षटकांचा हा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर आणि तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज राकेश सज्ज होतोय. एक खेळाडू पाहायला मिळतोय टिप्सकरला. विकेटला लॉक ऑन लॉक ऑफला क्षेत्ररक्षक, कव्हरला क्षेत्ररक्षक, कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. हे समीकरण कुठेतरी या मैदानावर गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज तो मात्र राकेश सज्ज होतोय. सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. नैसर्गिक अडथळ्याला चेंडू आढळला येतोय. पण सांगतायत 8 चेंडूचा इशारा. योग्य तो निर्णय या आयोजकांच्या वतीनं. वडेश्वर चषक 2022चा हा रणसंग्राम या मैदानावर रंगला जातोय. सांघिक धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज राकेश नामक गोलंदाज फिरकी गोलंदाज सज्ज होतोय. सामना करेल तो मात्र आकाश. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बबलूची ही थोडीशी अफेट लावली होती. बबलूनं
चुकीचा परिणाम थोडासा हा एकेरी धावसंख्येसाठी प्रयत्न सुंदर होता बबलूचा मैदानामध्ये अंतिम क्षणापर्यंत, पण चेंडू विजय सितोळे जमनी लगत थोडासा विसावला जात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 21 धावफलकावर 21 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. सांघिक धावफलकावर 21 धावा, पहिल्या बैल चेंडूचा हक्क हे समाप्त. आणि डाव्या हाताचा फलंदाज रोहन पेडणेकर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका, डेप पाईन लेगला जमनी लगतचा पाहायला मिळतोय. डीप ऑन द कार्पेट मध्ये फटका, सरते शेवटी चेंडू जवळ जवळ विजयास येतोय, जवळ जवळ चौकारासाठी गंड जातोय फटका. आणि 4 धावांना स्वागत केलं तर राकेशचं. आणि सांघिक धावफलकावर 25 धावफलकावर डीजे. एका गड्याच्या बोबतल्यात आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मान्यवर कक्षाच्या कडनं. पुन्हा एकदा राकेश सज्ज होतोय, त्याच पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा त्याच पद्धतीचा जसं रिप्ले असा फटका पाहायला मिळतोय. आणि बॅक टू बॅक मात्र दुसरा चौकार जवळ जवळ गणला जातोय की काय. पंच आमच्याकडे वळतायत, इशारा करतायत 4 या धावसंख्येचा. बॅक टू बॅक रोहनच्या चेंडू पळीतून दुसरा चौकार आणि सांघिक धावफलकावर 29 धावफलकावर डीजे. गोलंदाज राकेश सज्ज होतोय तो पुन्हा एकदा थोडीशी महागडी गोलंदाजी, धावसंख्येला लयलूट करणारे एका बाजूनं एसजॉरियस ची वादळी केळी आणि त्याच पद्धतीनं पुन्हा एकदा मोठा फटका. बॅक टू बॅक 3 चौकार गणले जात आहेत की काय. आणि सरते शेवटी चौकारांची पहिली हॅट्रिकच्या रोहन चौकारांची लयलूट सर्व काही तेजोमय सितारासारखा रोहन चळकतोय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीनं फटका टळवण्याचा मनस्बा होता. परिणाम मात्र एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दूर धावसंख्येमध्ये गणलं आहे. आणि तब्बल या 4 चेंडूंवर मात्र तब्बल 14 धावा खर्च करतोय तो गोलंदाज. एका बसून या मैदानावर तो राकेश तब्बल 15 धावा खर्च करतोय आपल्या षटकामध्ये. 5 चेंडूंमध्ये 35 धावा धावफलकावर आणि षटकाची सगत करणारा अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, जरी तुम्हाला 3 चौकार टोलावले तरी तुला मी बाद करणार हा अट्टास त्याला बाळगला गेला. आणि तो बाळगलेला अट्टास कुठेतरी ऐन मुकेश आणि म्हणजे अंतिम चेंडूकर या ठिकाणी यशस्वी ठरतोय. तो गोलंदाज 3 चौकारांची बहारदार खेळी आली संपुष्टात. आणि संघाचा संघनायक मैदानामध्ये ज्यानं जवळ जवळ या मैदान हे गाजवलं, रसिक प्रेक्षकांची मन या ठिकाणी जिंकली. जवळ जवळ मुंबईवरून ही स्पर्धा येतो खास खेळण्यासाठी. आणि तो मैदानामध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार त्याने पण टोलावले या मैदानावर. तो प्रथमेश नामक फलंदाज पावलं टाकतोय एसजॉरियस संघाच्या बाजूला. एसजॉरियस संघाच्या कोट्यामध्ये एक असो एक खेळाडू, ताकदवान खेळाडू, बाहुबली हा म्हणजेच आपल्याला योगेश पण पाहायला मिळेल. म्हणजे आज लढत एक तुळशीची आपल्याला पाहायला मिळतंय. सांघिक धावफलकावर 35 धावा, 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. आणि गोलंदाज मार्कवर गोलंदाज संघाचा तारणार ज्याला संबोधला तो संघाचा कर्णधार जयेश सरमळकर सज्ज होतोय. सलामीला आलेला आकाश या मैदानावर एका बाजूनं सुरेख फटकेबाजी,
त्या फटकेबाजीला जोड रोहन पेडणेकरची तब्बल 3 चौकार आणि 9 खेळाडू प्रथमेश पावलं टाकतोय आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा निर्णय पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा निर्णय 3 खेळाडू हे 30 सर्कलच्या बाहेर असतील. बघूया कोणते 3 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर. डीप स्क्वेअर लेगला दिसतोय, डीप मिड विकेट लेग दिसतोय आणि जवळजवळ मात्र या मैदानावर समीकरण कुठेतरी या ठिकाणी मात्र एका सुसज्ज स्थितीमध्ये असताना ऐनमुखेच्या क्षणी योग्य तो निर्णय एसजॉरियस संघाचा बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले 4थ्या षटकाला प्रारंभ आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज जयेश सरमळकर सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकर एंडला आकाश ही जोडी मैदानामध्ये. बॅटची हलकीशी कट लागून चेंडू जातो क्षेत्ररक्षकाला चकवून सरळ तो मात्र नो मध्ये उसवला तो क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेपर्यंत 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत आणि बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावफलकावर 37 धावा या धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर पहिलं चेंडूचा खेळ समाप्त. 4थं षटक हे प्रगतीपथावर असताना या मैदानावर मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर तो मात्र सूरज एका हाताने या ठिकाणी मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. एकेरी धाव संख्येत या ठिकाणी फटका गणला जातोय आणि प्रथमेश एक धाव सांघिक एका धावेला 38 धावा या धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आजच्या दिवसातील सांगता करणारा आजच्या दिवसातील हा सामना एमएसपी स्पोर्ट विपक्ष एसजे वॉरियर्स संघांच्या बाजूने फटका या ठिकाणी फसला जातोय की काय आकाशचा साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा चेहरा टिपला जातोय आणि ब्रेक थ्रू लावणारं षटक मला म्हणून का संबोधलं तर धावसंख्येला प्रतिस्पर्धी संघाच्या सुरुंग लावायचा येणाऱ्या काळात धावफलकावर धावसंख्या एका सुसज्ज स्थितीमध्ये असताना बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा फायदा उठवावा हा मनोजोगा आखूनचा आकाशची मोठे फटकेबाजी आणि तो फटका फसला लॉंग ऑफला आणि झेलबाजच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागलं. डीजे स्ट्रायकर एडला संघाचं संघनायक प्रथमेश, त्याच्या साथीला रन मशीन एजॉर्जिया संघाचे बंटी गावडे आणि कमेंट्री बॉक्स कडनं जर गडी बहाल केला तो जय सरमळकर. पुन्हा एकदा या ठिकाणी या मैदानावर अपील केलं जातोय. पंचांकडे थोडस प्रेशर आणलं जातोय. अतिरेटीचा सामना एमएसपी स्पोर्ट्स संघाला खातं ओपन करायचं आहे आणि एका बाजूला एजॉरियस संघाला अग्रस्थानवर राहण्यासाठी ही तडफड या मैदानावर या 2 संघांची आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा मोठा फटका बघूया. सुंदर मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय चौकारासाठी. चौकारानं स्वागत आणि या 4 धाब्यानं सांघिक धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 42 धावा या धावफलकावर. प्रथमेशच्या चौकाराबरोबर 42 धावा या धावफलकावर मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका पण एमएसपी स्पोर्ट्स संघ कुठेतरी या ठिकाणी लक फॅक्टर ठरतोय. नैसर्गिक अडथळ्याला चेंडू थोडा सडला जातोय. बॅकअप सुंदर पद्धतीचा शेवटच्या क्षणापर्यंत पकडापकडीचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. तो एमएसपी स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला प्रत्येक खेळाडू चेंडू पकडण्यासाठी पण सरते शेवटी बबलू गावडे चेंडूवर येतोय. चेंडूचा ताबा मिळवतोय तोपर्यंत या धावा धावफलकावर मात्र बहाल केल्या जातात. 44 धावा या धावफलकावर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. टीम मीटिंग नको मित्रांनो. सूर्य जवळजवळ मावळतीकडे जवळजवळ 5 वाजून येत आहेत कारण अजून एका इनिंगचा खेळ आहे आणि या इनिंगचे अजून 2 षटक बाकी आहेत. विनंती असेल लवकरात लवकर सामन्यांना सुरुवात करूया आपण.
गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज षटकाला सुरुवात केली. थोडीशी महागडी गोलंदाजी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये तो दर्शन सज्ज होतोय. मोठा फटका टोलवला जातोय डीप मिड विकेटला. राकेश चेंडूच्या खाली लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल टिपला जातोय आणि बंटी गावड्याला ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा रचला होता त्या ठिकाणी बंटी गावडे माघारी परततोय. पण मी म्हणेन एका बाजूने एसजीआरएस संघाच्या कोट्यामध्ये षटकार सावकारांच्या बादशाह आपल्या समोर आहे प्रथमेश. त्याला स्ट्राईक द्यायची आहे पण आपण हिरो बनण्याच्या नादात बंटी माघारी परतला. डगआउटचा शिकार बनला. सांघिक धावफलकावर मात्र 44 धावा या धावफलकावर डिसेल. अजमावतोय याचे सर्वांचे लाडके सर हेमंत गावडे सर मैदानामध्ये पावलं अजमावत आहेत. आणि जी सुरुवात एका बाजूला जरी मी मोठ्या धावसंख्येनं केली तरी प्रतिस्पर्धी संघाला कुठेतरी धावसंख्येला सुरुंग लावणार ही 2 षटकांमध्ये हा निर्बळ एका बाजूला जयेश आणि दर्शन या मैदानावर. सुंदर फटका नोबॅ स्लॅब मध्ये विसावला तो चेंडू. क्षेत्ररक्षक आता मात्र कोणतीही चूक करत नाही. परतीची पिळगी वेगाने येत एकेरी धावसंख्या गणली जात. सांघिक धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 45 धावा या धावफलकावर. 45 धावा धावफलकावर 2 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतो. या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होत आहेत ते मात्र आमचे लाडके सर हेमंत गावडे सर. कुठेतरी लक फॅक्टर पाहायला मिळतोय. धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल की काय गावडे सरांना. पण ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी आपल्या रनिंग बिटवीन विकेट मध्ये वेगाने धावतायत आणि बहुमूल्य धाव आपल्या संघासाठी एसजीआरएस संघाच्या कोट्यामध्ये लगावत. सांघिक धावफलकावर 46 धावा या धावफलकावर. गती परिवर्तनाचा चेंडू. थोडासा स्लोरोन पद्धतीचा चेंडू. स्वतः मालक या ठिकाणी साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल सोडतोय. एका तगड्या खेळाडूचा झेल सुटतोय तो मात्र जयेश सरवळकर कडून. ज्याच्याकडे आशा अपेक्षा नव्हत्या त्याच्याकडून ही चूक आणि चुकीचा परिणाम येणाऱ्या काळात कितपत भोगावं लागेल आणि त्याचा एका बाजूनं दोष दिला जाईल तो एमएसपी स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं जयेश सरवळकरला. कारण हे झेल महत्वाचं होतं आणि सुटलेलं झेल येणाऱ्या काळात कितपत मागात ठरेल ती मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. मोठा फटका पुन्हा एकदा झेलची संधी. बबलू गावडे आमचा स्टार खेळाडू स्क्रीनवर. साधा सोपा झेल टिपला जातोय मात्र शॉर्ट मिडॉनला नंदू गावड्यांची ताकद कमी आणि कमी ताकदीचा फटका हा झेल मध्ये रूपांतर होत. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर थोडासा स्थिरावला गेला. 47 धावा धावफलकावर. 5वं षटक प्रगतीपथावर 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. येणाऱ्या काळात सुटलेलं प्रथमेशचं झेल. या इनिंगच्या अजून 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. एसजीआरएस संघाच्या आशा अपेक्षा आहेत एसजीआरएस संघानं या मैदानावर मात्र उर्वरित 7 चेंडूंमध्ये 3 मोठे फटके टोलवावे हा समर्थकांचा विचार आणि प्रतिस्पर्धी संघाला एका बाजूला जे सुरुंग लावणारं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं ते दर्शन नामक गोलंदाजाकडून. दीर्घंट नवीन फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडला. पुन्हा एकदा फटका बसलाय. सूरज येतोय. सूरजची ही थोडीशी मी म्हणेन पहिल्या प्रयत्नात चूक आणि चुकीचा परिणाम हा षटकारासाठी गणला जातोय. थोडीशी बोनस स्वरूपाची धावसंख्या या धावफलकावर. झेल होता मित्र सूरज पण तुझा ताब चुकतोय. तुझा कॉल चुकतोय. चुकलेला कॉल हा तब्बल 6 धावेसाठी गणला जातोय आणि सुटलेला साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा जयेश सरवळकर कडूनचा झेल आणि तब्बल प्रतिस्पर्धी संघाला मी म्हणेन बोनस स्वरूपी धावसंख्या येणाऱ्या काळ आपल्याला भोगावी लागेल ती एमएसपी स्पोर्ट्स संघाला. दिला जातोय. या इनिंगची सांगता करणार अंतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळतं या मैदानावर. शेवटचं षटक असेल आणि शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज फिरकी गोलंदाज स्टारोंक स्टार बबलू गावडे आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. स्ट्रायकर एंडला नीलकंठ. नॉन स्ट्रायकर एंडला एका जीवदानावर खेळी जाणं अजमावली. षटकारानं या ठिकाणी सांगता केली षटकाची. तो प्रथमेश 53 धावा धावफलकावर. कोलवर टप्प्याचा चेंडू. या ठिकाणी सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी. स्टारोंक स्टार मला का संबोधलायचं याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण पहिल्या वहिल्या चेंडूवर बहाल करतोय आपल्या संघासाठी एमएसपी स्पोर्ट्स संघाच्या वतीनं हा निर्धाव चेंडू गणला जातोय.
थोडासा या ठिकाणी आडव्या बॅटनं पटका टोलबाबा ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू बबलूला दंडात्मक केलं जात आहे. दंडात्मकाची एक धाव, सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 54 धावा या धावफलकावर. 54 धावा धावफलकावर बबलू सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा आमच्या मान्यवर कक्षेच्या एंडकडनं थोडासा स्लो रन पद्धतीचा जमनीलगतचा डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा पटका. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूवर ताबा मिळवतोय. परतीची फेक ही एकेरी धावसंख्येसाठी आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल मारतोय. 55 धावा धावफलकावर. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय, प्रोटेक्शन दिलं जातंय. एका बाजूला प्रथमेश नामक फलंदाजाला शॉर्ट टचपॅडला, शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक, पॉइंटला, कव्हरला, लॉंग ऑन, लॉंग ऑफला, डेप मिड विकेट, डिप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नाममात्र झेलची संधी. दर्शन चेंडूच्या खाली आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी एका हातामध्ये झेल टिपतोय आणि स्टारोंग का स्टार मला बबलू गावडे का संबोधलं जातं. जरा वाटलं होतं जवळजवळ 70 ते 75 धावा होत आहेत संघाचे, पण कुठेतरी एका बाजूनं जयेश सरमाळकरने थोडासा ब्रेक लावला आणि लावलेला ब्रेक त्याच्या पावलांवर पाऊल टाकत दर्शनची सुरेख गोलंदाजी आणि त्यानंतर बबलू आता मात्र सुरेख गोलंदाजी करत अवघ्या 3 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा खर्च करतोय आणि एक गडी बहाल करतोय तो प्रतिस्पर्धी संघाचा ऐश्वर्यस संघाचा. परती जोखमीच्या धावसंख्येकडे आणि पहिल्या प्रथमात या ठिकाणी मात्र थ्रो कलेक्ट करण्यासाठी बॉब्बूची थोडीशी जलबाजी आणि जलबाजीचा या ठिकाणी सदुरुपयोग एमएसपी स्पोर्ट्स संघाला दीड धावसंख्येसाठी एजॉरियस संघ त्याचा घेतोय आणि सांघिक धावफलक धावफलकावर 57 धावा या धावफलकावर. सुरेख गोलंदाजी अचूक टप्प्याची गोलंदाज. निरखंडेचा विचार होता थोडासा ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय, थोडस उभं राहायचं आणि कव्हर थोडं चेंडू टोलवावा हा मनजोगा हा फलंदाजाचा असपद राहतोय. पुढे सरसावत पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक ऐन मोक्याच्या क्षणी जवळजवळ ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आणि शेवटच्या चेंडूवर या ठिकाणी षटकार टोकला जातोय. इनिंगची सांगता हा षटकार
ऊपर कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको मुकाबले दिखाए जा रहे। ओ पहली गेंद पॉइंट पर कट, क्या खूबसूरत टाइमिंग है ये, और कट का एक लाजवाब शॉट, लगभग 2 रन मिलेंगे वहां पर। और अगर दौड़ते तो तीसरा रन भी निकल सकता, लेकिन नहीं दौड़े, वहां पर 2 ही रन मिले। 2 रनों के 7 रनों की संख्या 2 पर पहुंची मैदान पर। 64 रन जिससे पीछे जयेश ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर जो कि सूरज मैदान पर। बापू लॉन्ग ऑन पर इस वक्त 50 नंबर की जर्सी पहनकर, और मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी जो तैनात है सीमा रेखा, मतलब 2 खिलाड़ी जो सीमा रेखा पर तैनात है। अच्छा, इस बीच मतलब गेंदबाजी में जो कि वही गेंदबाज, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, पुल सक्सेसफुल है ये, गेंद निकल रही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। एक घसीट कर मारने का प्रयास किया, और जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने पहले सोच रखा है कि ये आक्रमण करना पसंद करेंगे। सही सोचे मैदान पर, आप अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आप अटैक कीजिए, बाद में बात की देखी जाएगी। और जिस तरह से ये फील्डिंग है, 4 ऑफ साइड पर 5 ऑन साइड पर, ये चक्रू मैदान पर। ओ ऑफ स्टंप के बाहर से फिर से घसीटा गेंद को, शॉट मिड ऑन पर जो कि फील्डर मौजूद है। देखिए अजहरुद्दीन अंदाज में थ्रो था ये कुछ खिलाड़ी पुराने साल के नहीं है, लेकिन युवा है, आज भी थ्रो करने का जो अंदाज रहता ना, वो बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह। इस बीच वापस जर्सी नंबर 5 पहनकर जिस तरह से बापू लॉन्ग ऑन पर खड़े, काफी लोग उनको ऑटोग्राफ ले रहे हैं। एक खूबसूरत खिलाड़ी है ये, शायद वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि साइन करते थक चुके हैं आज के दिन पर। ओह, पैड पर लगी है विकेटों के सामने, और ये आउट मैदान में। पहला विकेट निकला, इस विकेट के साथ टीम का टोटल स्कोर अभी भी वहीं पर 64 रनों का पीछे करती 7 रन पर। बल्लेबाज साबाजी मैदान पर। अब लॉन्ग ऑन पर बंटी है, मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी साथ साथ मौजूद है, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंच चुका है। ओ बढ़िया, वहां पर शायद तो मौका है, वहां पर कैच हो लिया, और यहां से दूसरा विकेट निकलता हुआ। बैक टू बैक 2 विकेट मैदान पर, 64 रनों का सवाल, उस सवाल का जवाब देती हुई पहली 7 रन में चुके, 2 विकेट के नुकसान पर, एक ओवर समाप्त, 7 पर पहुंचा टीम का टोटल, 2 विकेट नुकसान पर खेल चलता हुआ मैदान पर 64 रनों का पीछे करती है टीम सामने से। समाप्त हो चुका है। बापू को अब गेंदबाजी पर, बंटी इस पूरे एरिया में प्रख्यात, कुछ लोग चाहने वाले उनको बंटी पटेल भी कहते हैं। जिस तरह से उनके साइन लोग ले रहे थे ना, उससे अंदाज लग रहा है कि ये एक बड़ा खिलाड़ी है। बंटी जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी, आज बल्ले फील्डिंग देखी ऑन साइड पर सीमा रेखा, और आज गेंदबाजी करेंगे। खास जो कि बंटी इस मैदान पर गेंदबाजी पर। गौरव, ओ क्लीन बोल्ट, क्लीन बोल्ट करते हुए मैदान पर तीसरा विकेट।
क्या गेंदबाजी मैदान पर, शायद तो जिस तरह से शुरुआत के 3 विकेट उनके प्रमुख गेंद बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 64 रनों का पीछा करना है मैदान पर। और बापू को देखिए वो लॉन्ग ऑन पर खड़े, चेयरअप नहीं करेंगे, पता है कि मैच जल्दी समाप्त होना चाहिए। चाहने वालों की tennis.com के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबला दिखाए जा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात है ना कि अंतिम मुकाबला ये शाम का समय, ये बिल्कुल देखिए नजारा कितना बेहतरीन है। ये चारों तरफ हरियाली है और बिल्कुल विकेटों के पीछे जो कि बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, एक बिल्कुल योजनाबद्ध खेल। आज जिस तरह से बल्लेबाजी हुई ना, 3 विकेट निकल चुके। गेंदबाजी में नया खिलाड़ी मैदान पर है, बबलू मैदान में। योगेश परब कह रहे हैं कि स्टारों का स्टार है ये बबलू। बबलू ने आज एक बेहतरीन कैच लपका, जो कैच मुश्किल था वो लिया। बबलू पर पूरी टीम का दारोमदार है। बबलू देखिए किस तरह से, इनके पास ताकत बहुत ज्यादा है। 140-42 के आसपास ये जो कि उनका स्ट्राइक रेट रहता है, ये बहुत तेज खेलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन गली पर मोड़ा, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद जा रही है। पहला रन तो बहुत तेज निकला है। बबलू ने अपने खाते में निकाले 2 रन मैदान पर। इस 2 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का टोटल 9 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। बापू जो कि लॉन्ग ऑन पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। कुछ इस तरह से ये फील्डिंग मैदान पर, 4 ऑफसाइड पर, 5 ऑनसाइड पर। अब एक युवा खिलाड़ी जो कि जा रहे हैं लेकिन बैकफुट पॉइंट पर, मतलब 5 ऑफसाइड पर और 4 ऑनसाइड पर। गिरीश शिकावड़ी जो कि इस वक्त सुबह से लेकर जो कि स्कोरिंग का काम कर रहे थे, आज वो थोड़े से रुक चुके। लेकिन चलिए इस माहौल में बेहतरीन मुकाबला ये शाम के समय पर। ओ ऑन साइड पर हवा में गेंद बल्ले पर तो लगी है। लॉन्ग लेग सीमा रेखा से गेंद थर्ड मैन तक निकली है। हालांकि तब तक मिलेंगे 2 रन और लगभग देखिए किस तरह से बात है। 142 का स्ट्राइक रेट रहता है। पहली 2 गेंदों में उनका 200 का स्ट्राइक रेट है। ये 4 रन बना चुके 2 गेंदों पर। स्टारों के स्टार बंटी है ये इस वक्त। ये जिस अंदाज से खेलते, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ये 3 से 5 ओवर में बहुत घातक हो जाते हैं। 180 और 5 से 6, 250 के आसपास रहता है उनका स्ट्राइक रेट। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर निकल रही है। और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा, लगभग 3 गेंदों पर 6 रन बनते हुए बंटी के बल्ले से, और टोटल स्कोर 13 पर पहुंचा। 13 पर पहुंचा मैच में। टोटल 4 गेंदें हो चुकी है। एक पहली गेंद पर एक सफलता क्लीन बोल्ड उड़ाया। उसके बाद बंटी पटेलों का पटेल, बंटी पटेल जो कि इस वक्त देखिए ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी है ये। ओ कट किया गेंद को पॉइंट पर। टाइमिंग देखिए, सिर्फ टाइम देखिए, सिर्फ टाइम, ताकत नहीं लगाती है। अगर यही फील्ड आउटफील्ड अगर क्विक होती ना, तो ये गेंद बाउंड्री के बाहर होती। मतलब टाइम देखिए, सिर्फ टाइम करते। ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर चारों समय खेलने की क्षमता रखते। 8 रन 4 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट उनका रहता है। और हमने पहले बार 3 से 5 180 के ऊपर ये खेलते अमूमन, और 5-6 से 250 के आसपास रहता है स्ट्राइक रेट। मतलब एक फिनिशर की अहम भूमिका निभाते ये। देखिए जाए तो कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट, ये बहुत बार होता है। और साथ साथ आज और एक खिलाड़ी बापू को देखिए लॉन्ग ऑन पर खड़े। ये काफी लोग उनका समर्थन कर रहे, ऑटोग्राफ भी ले रहे कुछ लोग उनका। और देखिए क्रिकेट देखिए हल्के हाथ से, कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाते। देखिए किस तरह से खेल को चलाते रहते। ये 5 गेंदों खेली है, लगभग 9 रन बनाए। अभी भी 180 का स्ट्राइक रेट उनका इस मैच में। और टीम का टोटल स्कोर 2 और समाप्त 16 पर पहुंचा। 64 रनों का पीछे करते। अंतिम में 24 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। पार्ट टाइम बापू भी बॉलिंग करते। कब गेंदबाजी करेंगे बापू आप, ऐसा चाहने वाले पूछ रहे। देखिए छोटे बच्चे से लेकर बहुत से लोग इनका ऑटोग्राफ ले रहे। कैमरामैन बापू तक आप कैमरा पहुंचा सकते हैं। देखिए कैमरामैन बापू के लॉन्ग ऑन पर खड़ा है ना, वो बापू है। एक बेहतरीन खिलाड़ी है ये चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है बापू की।
ये मुस्कुराहट ही एक अलग से रहती है। इस मुस्कुराहट के बारे में राज क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन चलिए ये इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा बबलू। ओह वाह, टाइमिंग देखिए, खूबसूरत टाइमिंग। हालांकि गेंद रुक चुकी है वहीं पर है, अन्यथा ये बाउंड्री थी, लेकिन शॉट देखिए घुटनों के बल पर झुककर इस शॉट को सिर्फ टाइम किया। ये लेजर क्रिकेट में शॉट अमूमन देखते हैं हम ये, और ये खिलाड़ी इसलिए तो कहते हैं ना बबलू ऑन स्ट्राइक मैदान पर। 5-6 गेंदों पर लगभग 11 रन बना चुका खिलाड़ी है। अभी भी 180 का स्ट्राइक रेट इनका। वापस फिर से कवर पर, फिर से टाइमिंग बेमिसाल है। कवर बाउंड्री पर शॉट निकला है, हालांकि अब फील्डिंग खराब हो चुकी है। दूसरा निकल चुका है, फिर से शायद खिलवाड़ हो रहा है फील्डर के साथ। गेंद कर रही है, 4-5 बार उनको छकाया, उसके बाद गेंद मिली उनको हाथ में, लेकिन तब तक 2 रन। मतलब हर गेंद पर सिर्फ टाइम करे, कोई जोखिम नहीं उठा रहे। 20 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। अभी भी 44 रन की आवश्यकता अंतिम 22 गेंदों पर, और इसी स्ट्राइक रेट से खेलते रहेंगे ना, लगभग हर गेंद पर 2 रन, तो 44-22 गेंदों में बन सकते हैं। फिर से वापस गेंदबाजी का मोर्चा, राइट हैंड, और 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर है। प्रोटेक्शन, ओह रिवर्स मारने का प्रयास किया, शायद रिवर्स के लिए गए, लेकिन ऑप्शन के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। और ये बीच बीच में कुछ इस तरह से भी शॉट खेलते हैं, मतलब जो शॉट वो उनको पसंद है वो खेलते हैं। और हमेशा बबलू जो कि टाइम क्या, कवर पर हल्के हाथ से, शायद यही शॉट अगर ताकत लगे तो छक्का था मैदान पर। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रनों की संख्या अब पात्र पहुंच चुकी है, जबकि 22 पर 42 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे। और बबलू जो कि खेल रहे हैं मैदान पर। ओह, पैड पर लगी है गेंद, ऑन साइड पर, और ये शायद विकेट कीपर क्या कर रहे हैं? आउट हो गए। दोबारा प्रयास भी किया, उधर विकेटों के सामने पाए गए और एक विकेट निकलता। 4 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का टोटल स्कोर 22 पर पहुंचा। अभी भी 42 रनों की आवश्यकता इस मैच में। बाईस पर पहुंचे टीम का टोटल मैदान पर। इस वक्त नया खिलाड़ी दर्शन मैदान पर। दर्शन भी एक आक्रामक खिलाड़ी है, 140 का उनका भी स्ट्राइक रेट है, मतलब ये भी बड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं बबलू के साथ मिलकर। और ये स्वीप किया गेंद को ऑन साइड पर, स्कोर लेग बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकलता हुआ। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ेगी। 2 रन बनते हुए, और 2 रन के साथ रनों की गति अप, मतलब रन संख्या जो कि पहुंचे इस मैच में 64 का पीछा करती हुई। टोटल स्कोर इस मैच में बनता हो जो कि 24। 40 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर इस मैच में। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, उम्मीद है कि ये मैच बनेगा। ओह, ताकत लगाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के लिए वो जगह बना रहे। लगभग इस तरह से लग रहा है तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। तीनों समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है जो कि 24। और अभी भी अंतिम जो कि खेल बचा 18 गेंदों का। 18 गेंदे, लगभग 40 रन मैदान पर। 13 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे इस मैच में। और लगभग अभी तो मैं कहूंगा बापू, मतलब जो से बबलू बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर गेंद पर 2-2 रन उन्होंने बनाए, मतलब जिस स्ट्राइक रेट से, उस स्ट्राइक रेट से आप मैच में कभी भी वापसी कर सकते हो। मैदान पर मैच को, जिससे पीछे बिल्कुल बबलू ऑन स्ट्राइक है। यारों के यार बबलू जो कि मैदान पर। और जिस तरह से बबलू खेल रहे हैं, लगभग उनके 7 गेंदे हैं और 14 रन जोड़े उन्होंने, मतलब 8 गेंदों में 14 रन है। एक 80 का स्ट्राइक रेट उनका, हम हमेशा कहते हैं
और गेंदबाजी में तब्दीली जो कि नीलकंठ ऑफ स्टंप के बाहर, लाइन थोड़ा सा बाहर रखा, वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में मंतवा और ये आउट। नया बल्लेबाज प्रदीप मुलिक मैदान पर, और बापू को देखिए लॉन्ग ऑन पर अभी वो खड़े हैं, काफी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं बापू का। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी की खासियत बात है कि जब भी ये टीम में रहता है तो वो टीम लगातार जीतती रहती है। ओह बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लाइन को पीछे मुड़कर अंपायर की तरफ क्या देख रहा था भले गेंदबाज, ये कुछ पता नहीं चला, कुछ तो देख रहा था, शायद उन्होंने बापू को देखा मेरा अंदाज। एक गेंद जी गई है, ये पीछे मुड़कर क्या देख रही है ये तो नहीं पता चला। देखिए गेंद भी काफी बाहर जा रही थी ऑफ स्टंप के, वापस नीलकंठ मोर्चे पर। ओ क्लीन बोल्ट, क्लीन बोल्ट किया वहां पर, शायद बापू को वहां से इशारा था ये बॉल उड़ाएंगे, इस तरह से होगा मेरा अंदाज। और देखिए क्या बॉलिंग की मैदान पर, शुरुआत में नीलकंठ ने बिल्कुल 2 विकेट निकाली, उसके बाद ये लगातार विकेट मैदान पर। अच्छी बॉलिंग नीलकंठ की, एक बेहतरीन बॉलिंग नीलकंठ की, क्योंकि जिस तरह से विकेट निकाल रही है, काफी प्रेशर मैदान पर। 25, ओ थोड़ा सा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। ओके ओके ठीक है नीलकंठ, आप ठीक हो ना, क्योंकि थोड़ा सा टीम को आवश्यकता है कि आप चोटिल ना हो जाए। अनिकेत ऑन स्ट्राइक मैदान पर, काफी विकेट निकल चुके हैं मैदान में। ओह बहुत तेज खेलते हैं ये, बिल्कुल बीट करते हैं मैदान पर। दोनों की संख्या अभी भी लगभग 25 पर, अभी तक कोई रन नहीं दिया, मतलब वो वाइट का रन था, अभी तक 25 ही रन है मैदान पर। ओ फिर से बीट किया, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये वाइट बॉल, 26 पर पहुंचा टीम का टोटल। अनिकेत जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है, घर के मैदान पर बहुत बार उन्होंने आक्रामक बैटिंग की, लेकिन इस मैदान पर शायद इस बार बढ़िया गेंदबाजी पर, बल्ले पर लगी है, लेग स्लिप के बगल से निकलेगा, एक रन तो निकलेगा। और कॉल अच्छा, अनिकेत बहुत तेज है, विकेट के बीच में 2 रन वहां पर बनते हुए। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 28 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। अनिकेत ऑन साइड पर बहुत स्ट्रांग है, ऑन साइड उनका जोन जो कि स्ट्रांग जोन है उनका, ये ऑन साइड पर दूर दूर छक्के मारते, सबसे लंबा छक्का उनका 122 मीटर का, जो देखा नहीं किसने होगा, अब मार सकते हैं। देखिए ऑन साइड पर ही शपल क्या घुटनों के बल बैठकर शॉट लगाने का प्रयास करते और समाप्त हुआ। अब लग रहा है कि शायद बापू भी गेंदबाजी कर सकते हैं। टीम का टोटल स्कोर 26 हो चुका है, 38 रन, 28 36 रन की आवश्यकता, ओके ना, जिससे पीछे
विस्फोटक दर्शन ने मट के मैदान पर 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए, मतलब काबिलियत इनमें बहुत ज्यादा है मैदान पर। पहली गेंद कवर, बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। टाइमिंग बेमिसाल था, खूबसूरत टाइमिंग। अनिकेत जाकर कुछ बता रहे कि उनका जोन ऑन साइड पर, आपका जोन ऑफ साइड पर। ये कुछ बातचीत हो रही मेरे अंदर से। ये बहुत ज्यादा अच्छे खेलते और उन्होंने कुछ, दर्शन ने कुछ बताया नहीं। दर्शन बोल रहे मैं बोलूंगा नहीं, आज बल्लेबाजी करनी है मैदान पर। अभी भी 32 रन जिससे पीछे 11 गेंदों पर। अनिकेत जो कि मुस्कुरा रहे, दर्शन ने कुछ बोला उनको, कहा कि जाइए आज मौका है हमें बल्लेबाजी करने का। यही कुछ बातचीत हुई। ओ फिर से गैप में, फिर से फील्डिंग, वहां पर अच्छी गेंद था, ये बाउंड्री थी। अब शायद चलिए अनिकेत को मौका है, पावर प्ले का इशारा हो चुका है, मतलब ये पावर प्ले की 4 गेंदें बचे। और ये क्या कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और ये अनिकेत ने अपनी विकेट दे दिया और ये आउट। सेक्रीफाइस की विकेट, ये आसान नहीं बात है, ये एक बड़े खिलाड़ी के लिए अपना विकेट देना। हालांकि यहां पर 1 रन तो मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, शायद मौका, और 2 रन वहां पर बनते हुए। गौरव गेंदबाजी के मोर्चे पर है। अभी भी आवश्यकता 29 रन की मैदान पर। 9 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। 3 गेंदों पर 3 छक्के मारेंगे तो मैच बनेगा। ओ मिस टाइम, फिर से ताकत लगाई, गेंद निकल रही है। थर्ड मैन लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, गैप में गेंद है, शायद अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन फिर भी मिलेंगे आपको 2 रन मिलेंगे। देखिए 2 रन तो अब 27 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। दर्शन में ताकत बहुत ज्यादा है। अगर दर्शन मैदान पर 1-2 शॉट लगाते हैं तो मैच फिर से वापस रहेगा इस मैदान पर। ओ बिल्कुल बीट करते हुए, बिल्कुल बीट करते हुए। 7 गेंदे 27 रन की आवश्यकता मैच को, जिससे पीछे। एमएसपीआर स्पोर्ट और एसजे वॉरियर्स टीम अब बॉलिंग कर रही है। एमएसपीआर टीम जो कि बल्लेबाजी करती है इस मैदान पर। ओ टाइमिंग बेमिसाल तो नहीं है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर, बापू कहां पर है? शायद बापू एक बार स्टाइल देखिए, उनकी स्टाइल देखिए। कुछ लोग इनके फैन इसलिए नहीं है। स्टाइल देखिए, बाउंड्री रोकी। इंटरनेशनल खेल में जिस तरह से आप बाउंड्री रोकते ना, उसी अंदाज में बाउंड्री रोके बापू ने। बापू वेल फील्डिंग, क्या फील्डिंग आपकी। 2 रन बचे, हाथ देखे, दर्शकों ने हाथ ला कर दिया। मतलब सोचिए कितना उत्साह इस खेल में। और अब शायद वही करेंगे गेंदबाजी, आखिरी की 6 गेंदें। अभी भी जिससे पीछे बनाने पड़ेंगे लगभग 25 रन मैदान पर। छह गेंदे 25 रन। बापू गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। शायद 2 जर्सी नंबर, 2 खिलाड़ियों की जर्सी नंबर 50 है, इसलिए हम फंस गए वहां पर। स्ट्राइक पर कौन रहेगा? संतोष, अनिकेत के लौटने के बाद संतोष जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है। शॉर्ट गेंद को पुल किया, बापू को मिलती हुई ये सफलता, और ये आउट मैदान पर। खुश रहेंगे बापू, इस साल उनकी पहली सफलता 2022 में इस लीग में। बबलू आउट हो चुका है। दर्शन अभी भी मैदान पर तैनात है। राजेश गेंदबाजी की बल्लेबाजी के मोर्चे पर। बापू वापस। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। ये लेग ब्रेक थी गेंद, कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए इशारा कर रहे हैं, ये लेग ब्रेक थी गेंद। हालांकि गेंद कंट्रोल नहीं कर सकती, ये फर्क था इनका। अगर ये कंट्रोल करते तो वाइड नहीं होती, लेकिन ये वाइड है अंपायर ने।
ये लेग ब्रेक भी करते हैं, मतलब जानिए कि ये बीच में गुगली भी कर सकते हैं। ये करते तो बहुत कुछ है, लेकिन आज ये देखिए किस तरह से करेंगे। स्टाइल देखिए उनका। ओ फिर से, ओ हो, इस बार सीधे हाथों में आउट। शायद नाराज रहेंगे। मट के मैदान पर 3 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने, इस मैदान पर शायद हीरो नहीं बन सके। और बापू को मिलती हुई दूसरी सफलता, बैक टू बैक दूसरा विकेट मैदान पर। 8 विकेट निकल चुके। के लिए हैट्रिक का मौका बापू के लिए रहेगा। ओ बिल्कुल बेट। अरे बापू का देखिए हेयर स्टाइल देखिए किस तरह से, जब वो दौड़ते तो बाल एक अलग से उड़ते। मतलब ईशांत शर्मा भारतीय टीम में कुछ बाल इनके हवा में जो कि उड़ते थे, और बापू को देखिए भाई, शाहिद अफरीदी जो हमेशा बाल को हाथ लगाते थे, कुछ इस तरह से। राइट हैंड ऑर्डर से बापू वापस गेंदबाजी के मोर्चे पड़ेंगे। ओह चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन अच्छी फील्डिंग, एक रन वहां पर मिलता हुआ। अब शायद मौका हो रहा आउट। ये स्टाइल देखिए बापू का, एमएस धोनी का स्टाइल है ये। पीछे नहीं देखा उन्होंने मुड़कर, सिर्फ पीछे गेंद को ढकेला और आउट हो गए। इसीलिए लोग इनके फैन बहुत ज्यादा है। बाउंड्री पहले तो किस तरह से गई, बाउंड्री भी आपने किस तरह से, 9 विकेट, आखिरी जोड़ी। हाँ ऑल आउट हो चुकी है टीम। आखिरकार बापू बस हो गया आपका काम, बापू टीम ऑल आउट हो चुकी है, अब गेंदबाजी नहीं करनी पड़ेगी। एक बहुत खूबसूरत जो कि बॉलिंग की बापू ने, सिर्फ रन खर्च किए इस ओवर में। बापू ने कुल मिलाकर 1 वाइट और 2 विकेट, 1 रनआउट का विकेट, 2 रन खर्च किए। इसके साथ ये आज का दिन लगभग समाप्त होता हुआ। शुभ रात्रि। और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन बनेगा ये भी बताएंगे। जिसने बल्लेबाजी आज बेहतरीन की, 18 रन जोड़े। उस 18 रनों में भाई छक्का रोहन पेडनेकर जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनता हुआ। रोहन पेडनेकर जो कि मैन ऑफ द मैच दावेदार बनता हुआ। सुबह लगभग मुकाबले 9:30 बजे शुरू होंगे।